So this is a sales session, and uh, somebody's come in and he's saying कि ये आए हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक क्रिएटिव एजेंसी खोली है, तो मार्केट रिसर्च में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आपने कोई भी चीज़ सेल करनी होती है, सो यू कैन ईदर फॉलो द ग्रोथ और यू कैन फॉलो द मनी. ठीक है, सो उसमें मार्केट रिसर्च जब आप करते हैं, बेसिकली यू गोइंग आफ्टर द टारगेट एंड सीइंग के कौन सा टारगेट जो सा ज़्यादा फ्रूटफुल है, और एंड देन यू गेट टू नो लिटिल बिट, रिसर्च लिटिल बिट अबाउट दैट टारगेट. ठीक है, और सो बेसिकली यू गो and all of this can be achieved through market research. इसके benefits basically होते हैं कि you are basically going in as an informed person who's targeting a certain segment, or chances of success are higher and you're better prepared. If you don't do this, you're basically shooting in the dark, or आपको वो जो edge मिलेगा with research that would not be there. So at the end you might be able to sell, लेकिन it would not be a targeted process. वो एक guess होगा. Thank you. अच्छा, next up is product strategy. इस पे आपने कुछ नहीं कमेंट किया. Would you be more comfortable, sir, कैमरा में देख के बात करने में, या इस तरह लाइक जैसे अभी आप कर रहे थे मुझे देखकर? Whatever works for you. We are up for both ways. जो भी आप हमें फिर वो वाला कर लेते हैं. So the next step is outbound lead generation, outbound email campaigns. Yeah, so outbound email campaign basically starts with planning a campaign. आप बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, सो ऊपर आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिसर्च करके कि आपने किस मार्केट के पीछे जाना है, क्या आपका टारगेट है. देन यू बेसिकली आइडेंटिफाई द चैनल और कंटेंट आप बनाते हैं, एंड देन यू मेक द रीच आउट. सो इससे बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि यू आर एबल टू कन्वे द राइट मैसेज. आपने मार्केट रिसर्च पे रिसर्च की हुई है उस टारगेट के बारे में, एंड उनको क्या चीज़ पसंद है, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एंड अगेन यू बेसिकली गो प्रिपेयर्ड. और अगर आप ये नहीं करेंगे तो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. अगर आपका मैसेज सही है और आपकी टारगेट ऑडियंस ठीक नहीं है, सो यू आर पार्किंग द रॉन्ग ट्री, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा. और अगर आपका मैसेज सही नहीं है एंड यू आर एबल टू रीच टू द राइट पीपल, तो इक्वली बैड, आपका वो इफेक्ट जो आप लेना चाह रहे हो नहीं. मैं अगला जो ब्रांच यहाँ मेरे पास आ रही है वो लीड स्काउटिंग की है. इसमें आपका ऑडियो नहीं था कोई? सो लीड स्काउटिंग, पब्लिकली अवेलेबल ट्रिगर्स, फोरम, कम्युनिटी स्काउटिंग, जॉब पोर्टल्स, कंटेंट बेस्ड लीड्स, इनबाउंड लीड्स. स्किप कर देते हैं. इसमें मतलब हमने 1 मिनट के अंदर नॉट, मतलब ये काफ़ी डीप चीज़ है. You can talk for more than a minute if you want. I mean, it's up to you. If you don't want to, we can skip it. स्किप कर लेते हैं, बाद में उसको एंड पे कर लेते हैं. So lead nurturing and closing. So lead nurturing and closing में basically technical pre-sales आती हैं. फिर once you reach to that person, और so बीच में they might or might not have a project for you right away. So उसमें keep live content होता है. आप every 2 months 3 months आपको एक touch point होना चाहिए, और उसके लिए content होना चाहिए that is of interest to that prospect, or and that includes scheduled touch points या random. For example, if somebody is always on a lookout for a SecOps resource, और आपके पास कोई अच्छा CV निकल आया है, और the customer said something interesting and you feel कि आपको एक उसको poke करना है, so you can send a resume and try and start initiate a conversation. और intent data में आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जहाँ पे कि उनको security में कोई and this is just an example. So security का कोई
कोई वहाँ पे डिस्कशन चल रही है या उन्होंने कोई जॉब पोस्ट कर दी है, और आप यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, तो वो चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। फिर प्रोजेक्ट की बात चल पड़ी, प्रपोजल्स आ सकते हैं जो कि आपने सबमिट करने हैं, और प्रायर टू दैट उनके साथ सर्विस एग्रीमेंट्स, एनडीएस वगैरह साइन करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हेल्प विद दैट एज वेल। सो बेसिकली इसमें टेक अवे यही है कि वंस द कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, आपको पता है कि इज द राइट पार्टनर, और दे आर ऑल्सो स्निफिंग यू थ्रू, और देयर इज द पोटेंशियल कि आप फ्यूचर में काम करेंगे। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कीप एंगेज, और आपके टच पॉइंट्स जो हैं महीने 1.5 महीने के अंदर एक अलग टच पॉइंट हो। सो वी डू दिस ऑल द टाइम, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आफ्टर 2-3 months आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो भूल जाएगा। बट इफ़ ही हैज़ योर कॉन्टैक्ट, इफ़ यू रीच आउट टू हिम रेगुलरली, और आपकी या केडेंस कॉल्स वगैरह कुछ स्टार्ट हुई हुई हैं, तो obviously that would trigger a response once they're in a position to commit, or they have a project they would like to engage on. Next one, the international presence, US, Dubai, Pakistan. Yeah, so Allied की we have 3 offices, एक पाकिस्तान में, एक यूएस में है और एक यूएई में है। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा होता है। सो पाकिस्तान में तो ऑफशोर है, और ऑब्वियसली डिलीवरी जो होती है इस चीपर, और टैलेंटेड लोग हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। सो दैट्स अ प्लस फॉर पीपल हु टारगेटिंग ऑफशोर रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ आ जाती है अमेरिका। सो अमेरिका में हमारा ऑफिस है। Customers sometimes, even if we offer them offshore resources, they're at ease just by knowing कि हमारी US presence है, US entity. So that's always comforting to them. तीसरी चीज़ आ जाती है UAE, for example. So it's a totally different beast. वहाँ पे prospecting से लेके just an entry into that job market is a totally different animal. And having an office there, having an insight and inroads to the process, and knowing the right people, that's an edge, or that basically gives you access to another market which is different. उसके benefits, उसके challenges different, and so we have all those ideas, or we have that presence, which is always good to have a multi-market targeted. Partnership management. Partnership management. So Allied में once you have reached the right people, और कंपनी आपको पसंद आ गई, आप उनको पसंद आ गए, and you guys agree on a partnership. So partnership manage करना भी it's a task in itself. और partnership तक पहुंचने के लिए, other than the initial meetings, sometimes the potential partner might ask you कि customers के बारे में बताएं, past projects के बारे में बताएं. So we have all that collateral in place. कई दफ़ा ऐसे होता है हमारे कस्टमर से कॉल भी सुनने आया, प्रॉस्पेक्ट जो होता है वो he would like to talk to few for old customers and partners, so वो भी अरेंज कर देते हैं। उसके अलावा जो पार्टनरशिप होती है ना, तो बेसिकली 2 तरह की होती है, एक सप्लीमेंट्री होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है, and there are a lot of other flavors to this as well, but these 2 are the most common. कॉम्प्लीमेंट्री की मैं एग्जांपल अगर दूँ तो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी है, उसमें हम भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि उनके कस्टमर्स के लिए, एंड कस्टमर को कोई 24/7 सपोर्ट चाहिए, या उनको उनका बजट नहीं है, ठीक है। सो वो पार्टनर क्या करेगा, ही कैन लीव इट ऑन द टेबल and let the project go, but in this case
हम उनको दे हैव अनदर ऑप्शन वेयर दे कैन एंगेज अस और ये दोनों मसले हल हो सकते हैं. दे कुड बी अदर एरियाज के एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट ले लिया है, इट्स नॉट फीजिबल और कस्टमर जो है वो थिंक कर रहा है, या कस्टमर या एंड कस्टमर जो है वो ही इज़ नॉट पुलिंग द ट्रिगर बिकॉज के उसको बजटेड नहीं है ये चीज़. सो वी कैन हेल्प इन दोज एरियाज. फिर तीसरी चीज़ आ जाती है जहाँ पे कि आप कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप्स होती है जहाँ पे वी वर्क इन सर्टन टेक्नोलॉजी और पार्टनर उसमें नहीं करता और पार्टनर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और टूल्स में काम करते हैं जिनमें हम नहीं करते. सो यू बेसिकली गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स और यू कंबाइन योर पोर्टफोलियोज. और अगर कोई काम आता है जो कि वो डिलीवर कर सकते हैं तो यू पास अलोंग दैट वर्क टू देम एंड वाइस वर्सा. सो बेसिकली ज़्यादा आपके लिए चैनल्स और मौके मिलते हैं फॉर डूइंग बिजनेस एंड वी डू दैट. Then community development, interactions. Yeah. So community development, I think it's really important. Pakistani. So I'll start with expats. So Pakistan, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके graduates जो हैं, they go and settle in the US, in Canada, in UK. All the time. और वो एक्सपर्ट्स जो हैं जो 15 साल पहले 20 साल पहले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ के अमेरिका में जाके सेटल हो गए, वो किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं वेयर देयर लीडिंग टीम्स, देयर लीडिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कंपनीज. सो देयर इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि वो काम कहाँ से करवाना चाहते हैं. एक डिसीजन कर सकते. शुरू से मतलब शुरू एज इन के ये वाला पॉइंट जहाँ पे कॉल आई ना, आप एक और पॉइंट एक्सप्लेन उस पॉइंट से स्टार्ट करें. या सो एक्सपर्ट्स हैं, देयर इन अ डिसीजन मेकिंग पोजीशन. यहाँ से 15-20 साल पहले जो पढ़ के गए हैं, देयर डिसीजन मेकर्स. और वो दीज कंपनीज कुड बी आईटी कंसल्टिंग कंपनीज और मैनेजमेंट कंसल्टिंग और एनीथिंग एल्स जहाँ पे आईटी इज रिक्वायर्ड. सो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में knowing these people and basically letting them know, because a lot of these people, they want to send work to Pakistan, लेकिन उनके पास कोई dependable partner नहीं होता. So knowing them is a very good idea, because they always, after spending so many years, they probably would want to give something back to the country. So that's always a good idea. Plus apprenticeship, they do that gladly. They engage with Pakistani people and they basically guide them, be a mentor to them, or बड़ी helpful, बड़ी fruitful चीज़ होती है. उसके अलावा पाकिस्तान में so we did an inventory. Lahore alone has about 1,200 small to medium-sized companies, IT companies, जो भी consulting करती हैं for local and international customers. So being in that arena, knowing most of them, or extracting a few select ones जो कि बड़ा अच्छा काम करती हैं, आपकी तरह का काम करती हैं, जिनसे आपका माइंड मिलता है. So we have that list as well, and we have a group, and we interact with them and we do business with them. So that gives you another channel, like 6th or 5th channel. And then Pakistani Pasha is a organization. We are part of Pasha Chamber of Commerce. So it's good to basically sail with the right fish. जहाँ पे के if you're not able to do something, they can help you, and vice versa. Hello. वालेकुम सलाम. जी वालेकुम सलाम. जी अल्लाह का शुक्र है.
अच्छी बात भैया मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, मैं कॉल नहीं कर अभी दूँ वो नहीं बनी सर, थर्सडे के दिन शूट है। ओके, ये लास्ट वाला ठीक था कि थोड़ा लूसी था? ना ये वाला एक बार अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन, क्योंकि वो बीच में जो आवाज़ आ रही है ना उसकी, So community development interactions. So basically एक साइड होती है प्रोजेक्ट डिलीवरी की, दूसरी साइड होती है जहाँ पे कि आप बैठे हुए हैं. सो यू आर, so basically Allied is an IT consulting company and we help deliver these services. अब इस तरह की बहुत सारी communities हैं जो कि who are in the same business in Pakistan and abroad, and you know these people could be expats. So Pakistani expat जो 15-20 साल पहले अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा जाके सेटल हो गए हैं, and they are in a decision making position where they can send work to Pakistan, or you know they are settled in their careers and they want a delivery team offshore, or people who they can visit, and people who speak the same language, their mother tongue, and the intent to giving something back to your roots or community. That's a very strong feeling. So we've come across a lot of people who've settled abroad, लेकिन उनका दिल जो है वो they want to give something back and they want to give business to Pakistan. So having contacts within that community has been very fruitful for us. And we have those communities जिसका कि हम access आपको दे सकते हैं. And these are some of these contacts are greenfield contacts जिनके साथ हमने काम नहीं किया, but we've talked to them and they're ready to go that route. And there are a few जिनके साथ हम काम कर रहे हैं for years and years. So that's one aspect. दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि local IT businesses. So during COVID, what we did, rather than expanding and hiring people within, we reached out to a few companies in Pakistan. So like for example, Lahore alone has about 1200 plus IT companies जो कि services sell करती हैं पाकिस्तान में भी और abroad. So extracting a few good ones जो कि like-minded companies हैं and they deliver good quality work, communication अच्छी है. तो उनका हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है. So whenever there is a lead that we cannot fulfill, we float that out to them. We work with them in all different sorts and ways. So staff augmentation से लेके referrals और वो सारी चीज़ें भी. So that's basically another channel of selling and delivering for the customer. इसके अलावा पाशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं जिनका कि हम हिस्सा हैं, और बेसिकली it gives you news and keeps you updated on what's happening within the IT industry around. So always a good idea. और इसका फ़ायदा आपको यही होता है कि you basically swim with the right fish, and whenever there is some news that affects you, वो आप तक पहुँचती है and opportunities भी वहाँ से निकलती हैं, you reciprocate basically. ठीक है जी, ज़्यादा लंबी हो गई चीज़ें, वो काटना पड़ेगा. अकाउंट मैनेजमेंट. ओके, सो अकाउंट मैनेजमेंट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. इसमें आप सेल्स ने एक डील क्लोज कर ली, और
डेवलपर्स ने काम स्टार्ट कर दिया, और डेवलपर टू डेवलपर काम चल रहा है। बट एज एन अकाउंट उसको अगर आपने ग्रो करना है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, वेयर यू ट्राई एंड लर्न. So first of all, you get feedback from this customer, new customer, and you keep with them, a relationship where there is a back and forth. मतलब उनको क्या challenges आते हैं, where are some other areas where they need help, or where we can help them. Um, और बेसिकली एक आप cordial सा रिलेशनशिप बनाते हैं. That's a role, and within the sales team we have that role. And उसका बहुत फ़ायदा होता है अकाउंट को ग्रो करने में. और अगर ये ना किया जाए तो बहुत कभी इम्कान है कि ये अकाउंट को बहुत ज़्यादा आगे जा ना सके बियॉन्ड दैट इनिशियल प्रोजेक्ट जिस पे कि आपने एक डेवलपर को लगा दिया. सो एक वन टू वन बिजनेस लेवल डिस्कशन, एक इंटरेक्शन, एक रिलेशनशिप, that's very important, and that's what we provide. Housekeeping. हाउसकीपिंग करनी है CRM वगैरह. So इसमें मैनेजमेंट और ट्रेनिंग और वो ही चीज़ें आ रही हैं. मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, CRM, प्रोसेस, प्रोटोकॉल, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अभी भी बना ही रहे SOPs. सो उससे जो हमें काम लेके आ रहा हो उसको क्या फायदा. मतलब ये बेसिक what we're saying is कि तुम्हें कभी ना कभी तो करनी ही पड़नी है. तो तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व करने में बड़ा टाइम लगाओगे. हमारे पास वो बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, जो सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनसे तुम अपना सेल्स का जो सिस्टम है उसको बेस्ट मैनेज कर सकते हो. So another one, another service that we provide here is basically the internal management of the sales team. So sales to you might not mean much, but it's a very methodical process. Just make it. You come across a lot of information, come across so many people. जो data होता है, it has to be organized. ठीक है ना. उसकी हाउसकीपिंग होनी चाहिए, उसमें सर्टन SOPs होने चाहिए. एक ही वक्त में काफ़ी कुछ चल रहा होता है वहाँ पे. उसके जो टीम्स वो काम कर रही हैं उसके KPIs होते हैं, तो उन KPIs को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है. और कुछ प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं. लोग दे कम एंड गो. ट्रेनिंग्स होती हैं एंड फाइंडिंग द राइट पर्सन, the right raw material, and then training them within a certain time period. So it's like a cookie cutter process. So we have all of those services within Allied, and we've been successfully doing it for decades, about 12 years now. So basically, आपको अपनी housekeeping, you have to keep your tools sharpened, and you have to get the work done through the resources based on certain KPIs, and that's the most important thing in this whole process, and we have that in place. Last one is upselling into existing customer relationships. So upselling is the last one. Upselling का मतलब है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक कस्टमर के पास, एंड यू लुक फॉर अदर एरियाज जहाँ पे कि उनको हेल्प रिक्वायर्ड है, एंड यू प्रोवाइड दो सर्विसेज. बेसिकली दिस इज अ वे हाउ यू ग्रो विद इन अ सर्टेन अकाउंट. उसकी बेशुमार एग्जांपल है हमारे पास. हम एक प्रोजेक्ट करने के लिए एक कस्टमर के पास गए, और उस एंड कस्टमर के पास भी रियलाइज़ कि इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल हमने एक ऑप्स का प्रोजेक्ट किया, और वहाँ पे हम गए तो उनके सर्वर्स में हमें फील हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आगे पीछे जा रही हैं और फोल्डर्स में आ रही हैं. और सो वी ब्रॉट दैट अप, और इट वाज अ 5-year project, 5-year long project that we delivered. Customer was extremely happy, and we were able to bring growth
just by doing certain things that we do within certain accounts. Obviously कस्टमर जो हमारा पार्टनर है उसके साथ मिलकर सो इससे बेसिकली ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं. सो यू ऑलरेडी हैव दैट रिलेशनशिप विद द टॉप लीडरशिप. आपको नया कस्टमर नहीं लाना पड़ता. देयर इज़ अ नीड. आप उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं. दैट्स गोना सेव देम सम मनी एंड टाइम. So you can directly go and talk to them and get that value. So low hanging fruit और अगर ये आप नहीं करेंगे तो then you have to spend another 6 months to find new customers. So uh, it's a way of expanding and getting new business. And this is one of our best practices that we follow throughout each of these accounts that we have.